सर रिकॉर्डिंग ऑन कर Recording in progress. Now, let us start with module interest rate risk today. When we did liquidity risk, we had what was our mismatch or gap? It was my assets that were inflows minus outflows, that is liability. Do you remember? This was the first or second day of the class. Now in liquidity risk we had 11 buckets, and if you remember that day we told that for interest rate risk also we have this buckets approach only, but we have 8 buckets. Okay. Now the only difference is here it was inflow minus outflow, that is assets minus liability. In interest rate it becomes RSA minus RSL. This is rate sensitive assets and rate sensitive liabilities. Now, what do you mean by rate sensitive assets? Look here. Bank has given or let us say in your liability, you have a saving account. Now this is a rate sensitive liability. If the interest rate on saving account is increased or decreased, it will affect the liabilities of the bank. But whereas current deposit, does it pay any interest? No. So this is not rate sensitive. This is simple liability. Is that clear or not? Yes. Okay. Similarly, in assets, you give a floating rate loan. That is a rate sensitive asset. But if you have cash balance with RBI where you do not get any interest, that is not rate sensitive. Is it clear? So here we do rate sensitive assets minus rate sensitive liabilities, and we get a gap. If the gap is positive gap means that your rate sensitive assets are more than your rate sensitive liabilities. Negative gap means that your rate sensitive assets are less than your rate sensitive liabilities. Now let us say for a bank whose rate sensitive asset is 100 and rate sensitive liability is 50, gap is positive 50. That means it has additional 50 rupees extra assets. Now suppose he says interest rate goes up by 2% overall. Now what will happen? So what is 2% of 100? It will be 102. That means pehle we were expecting 100 rupees to come, but now 102 will come. I request 2-3 people to please put on their cameras. And in case of liabilities, earlier we had to pay 50 rupees. Now increase it by 2%, we have to pay 51. So when you will calculate the difference is plus 51. Now tell me whether your position has improved or deteriorated. I request 2-3 people to Improved. put on. यार कितना मुश्किल है कैमरा ऑन करना? हाँ जी, 2 लोग और कैमरा ऑन कीजिए प्लीज. हाँ जी, so your overall position has improved. So there's a common sense behind it. If your gap is positive,
and your assets are increasing, that means your assets are more. You have extra assets. Okay, in that case, if the interest rate increases, you will benefit. Is that clear or not? But suppose the interest rate goes down by 2%. Now from 100, now the amount that you will get is 98. And from 50, the amount that you will get is 49. So if you will check the difference, it is plus 49. As compared to 50, your net interest income has reduced by 1 crore. समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है. Basically, if you have a positive gap, that means your assets are more than your liabilities, rate sensitive assets. Now, if in this case the interest rates go up because you have extra assets of 50 rupees and the rates go up, you will earn more money. You will be happy. But if the rates go down, you will earn less money as from before. You will be sad. Is that clear? Similarly, suppose your rate sensitive assets are 50 and liabilities are 100. That means your position is negative. Negative gap. Negative gap means your assets are less than your rate sensitive liabilities. You have more liabilities. Now suppose the interest rate goes down. What will happen? From instead of 100, now you have to pay 98. Instead of 50, now you will receive 49. Position is minus 49. You are happy, your situation has improved. Is that clear? Yes or no? And whereas if the interest rate goes up by 2%, then what will happen? This will be 102, this will be 51, this will be minus 51. Your situation will worsen. So this is the first main example that I wanted to do with you. All right? सर हेलो. हाँ जी. सर ये थोड़ा नीचे का पार्ट उस समय दिखा नहीं था. ये 50, 51, 49 ये नीचे में -50 और -49 कैसे हुआ? आपने ऊपर वाला पार्ट देखा था? हाँ हाँ हाँ. समझ आ गया? हाँ सर. तो नीचे वाले में सिर्फ ये डिफरेंस है ना सर कि यहाँ पे आपका गैप -50 है बिकॉज आपका रेट सेंसिटिव एसेट इज 50, रेट सेंसिटिव लायबिलिटी इज 100. योर गैप इज -50. ओके, दैट मीन्स आपकी जो रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज हैं दे आर मोर देन योर रेट सेंसिटिव एसेट्स. You have extra liabilities. Now, if the interest rate goes down by 2%, तो 100 में से 2% reduce करो 98, 50 में से 2% reduce करो 49. Your net interest position is -49. This is an improvement. पहले आपकी net interest position was -50 crore, now it is -49 crores. It is an improvement of 1 crore. Is that clear or not? सर क्लियर है, बट सर ये जो आपने यहाँ पे 50, 50, 100 ये कैसे लाए थे? ये तीनों का एक एग्जांपल है सर, ये एक एग्जांपल है. दिस इज एन एग्जांपल. अच्छा अच्छा ठीक. Now, let us do this question. सर Now, दो this गैप question is, हाँ जी बोलो. गैप से हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की हेल्थ का पता कर सकते हैं. मतलब अभी थोड़ी देर रुकिए सर, थोड़ी देर रुकिए. आप माइक भी बंद कीजिए, आपको थोड़ी देर में समझ आएगा. Now, सर माइक बंद कीजिए सर प्लीज सारे अपना. Now, this was a question that has come in the paper. He has given you current deposits, saving deposits, term deposits, FDR, cash in hand, call money, and
cash credit. Your current deposit is not your rate sensitive. It is not rate sensitive. Similarly, your cash is not rate sensitive. But your saving deposit is your rate sensitive liability. Term deposit is your rate sensitive liability. Now, many people will say, why will the term deposit, FDR, rate sensitive kab hogi? FDR is rate sensitive on the day of maturity, when it will be repriced, when it will be renewed. On that day, it will be sensitive to the interest rate changes. Suppose you have made an FDR today at 6%, and after 6 months, when it matures, at that day, the rate of interest is 7%, and the customer renews it. That means bank is sensitive to interest rate risk. Is that clear? सर कल एक वर्ड यूज हुआ था डीरेगुलेटेड, उसका मतलब क्या हुआ? सर आरबीआई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आरबीआई फिक्स करती है, ठीक है। आरबीआई बैंकों को कहती है कि इतना तो देना ही देना है, ये रेगुलेटेड है। एफडीआर में आरबीआई कुछ नहीं कहता कि कितना रेट मिनिमम देना ही देना है, दैट इज डीरेगुलेटेड। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, डीरेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल नहीं करना। Now call money is your rate sensitive assets, CC is your rate sensitive assets. Now first question, calculate the gap. So gap is equal to rate sensitive assets minus rate sensitive liabilities. What is your rate sensitive assets? Your rate sensitive asset is 300 call money and 3000 CC. What is your rate sensitive liability? 800 saving and 200,000 term deposit. So what is your gap? Your gap is plus 50, positive gap. Positive gap means that your rate sensitive assets are more than your rate sensitive liabilities. Is that clear or not? Note it down, please. அப்புறம் கர்ப்பப்பைக்கு கோகுலத்தில் அப்படி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாமல் சுற்றிட்டு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் எல்லாம் செக்கப் முடிச்சுட்டு போயிடுவாக்கா. சளிக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அவர்கிட்ட போய் எஸ்கேஸில், ஏன்னா பனிக்காலம் வந்துருச்சு, இனிமேல் நம்ம சளிக்கு இது பண்ணணும். Hello sir, good evening sir. Good evening ma'am. Sir, small request sir. Sir, actually we had missed some recordings, some classes. Recordings last 2-3 classes upload cheyaled sir. I told you in the beginning of the class we uploaded the recording, but in the Saturday recording there was some error. Tomorrow morning they'll upload again. Not Saturday class sir, earlier one. Holiday, acha, Saturday holiday recording. Yes sir, yes sir. Since that day there is no recording uploaded. Saturday class recording we uploaded, but it gave some error. Tomorrow morning we'll again upload it. Okay sir. Actually our timings are not matched with this class, so that's why I'm unable to attend the classes. So I want to see the recording sir. Thank you so much. Yes please. Have you noted this one? Great sir, great. 1 minute. सर फ्लोटिंग रेट हो तो सेंसिटिव हो जाता ना। फ्लोटिंग सेंसिटिव है बोली। हाँ सर, सेविंग बैंक डिपॉजिट अभी कब सेंसिटिव होगा वो एफडीआर भी सेंसिटिव है, वो रीप्राइसिंग पे सेंसिटिव होती है। आप उसको थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आई विल कवर द होल चार्ट।
सो अभी आप जितना मैं करवा रहा हूं उसको समझ लीजिए बस. Yeah. Next. Now this was the second question. He said, what will be the effect on NII if interest goes up 2% across the board? Across the board means both on assets and liabilities. That interest on assets also increased by 2% and liabilities also increased by 2%. Now if you remember, what was my RSA? RSA was 300 and 3000. So you increase 300 by 2%, this becomes 306. 3000 by 2%, this becomes 3060. 2000 by 2%, 2040. 800 by 2%, 816. So your gap is plus 510. Earlier gap was plus 500. Now your gap is plus 510. Can I say that my NII has increased by 10 crores? Note it down, please. एक्सक्यूज मी सर. सर ये गैप का भी डायरेक्ट 10% आप 2% ले लेते तो 510 आता तो वो भी सही होगा सर? कोई वेरी करेगा आगे? सर कर सकते हो बट उसमें ना एरर क्या आ जाती है, मींस दैट इज मच इजियर बट द प्रॉब्लम इज कि आप भूल जाओगे कि हाउ विल यू मींस मेनी टाइम्स पीपल मेक अ मिस्टेक दैट वेदर द NII has improved or it has worsened. First, secondly, if he changes this, if he says on assets it has increased by 1% and liabilities decreased by 1.5, then that will not work. So if you use this methodology, it will be simple. You will never have any problem. Okay, thank you, sir. Sure, sir. Sir, NII ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Net interest income. Shall we proceed? Yes, Next question. Now in the third question he says, what will be the effect on NII if interest rate goes down by 0.5% across the board? Across the board means both assets and liabilities. Fine. Now if you see, what is your asset? Your assets are 300 and 3000. So on 300 you reduce it by 0.5%. और ऐसे करो ना 3300 into 1.5 percentage बटन माइनस साइन इक्वल टू कितना आएगा? 3300 multiply button 0.5 percentage button on your calculator, then minus button, then equal to button. Tell me. मैंने कुछ नहीं किया. 3300 into 0.5% minus equal to. हाँ जी बताओ कितना आएगा? Sir, 3283. हाँ जी 3283.5. Okay. And now tell me 2800 into 0.5 percentage button minus button equal to button. 2786. 2786. तो पॉइंट वगैरह है कुछ? No, sir. Now what is the gap? 497.5. What was the gap earlier? Plus 500. Now it is 497.5. That means your NII has
decreased by 2.4 crores, 2.5 crores. Is that clear? If your calculations are correct, I don't know whether your calculation is correct or not. सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक चीज कर सकते थे. तो यही किया था सर, कोई और क्या किया? ये लो यार, आप इसको अलग अलग कर लो भाई. 300 में से 0.5 हटा दो, फिर 3000 में से हटा दो, फिर बाद में ऐड कर दो. एक ही बात है. नहीं सर, वही बोल रहा हूँ सर. इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे जैसे इसने बताया वैसे उसमें भी कर सकते थे. सर ऐसे ही किया है मैंने, चेंज क्या किया बताओ? What have I changed? But the only thing is here I have also told you how to use a calculator. Many people don't know how to use this, do this in calculator. सर फिर से लिख दिया कैलकुलेटर वाला. सर इधर देखो ना, ये 3000 है, इसमें से 0.5 कम कर, 0.5% कम करना है. तो 3000 मल्टीप्लाई बटन 0.5 फिर परसेंटेज बटन, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस बटन और फिर इक्वल टू बटन. बस. ओके सर, ये प्लस वाले भी प्लस हो जाएगा, बस ये है. बस और क्या सर, आप कर क्या रहे हो? आप जब यहाँ करते हो, आप कैलकुलेटर को कहते हो 3000 का 0.5% वो निकाल देता है. फिर आप कहते हैं इसको प्लस करना है माइनस करना है, बस वो साइन दबा के आप इक्वल टू कर देते हो. दैट्स ऑल. ओके सर. नाउ in your case study book, do this case study number 90, everyone. There are 4 questions. Everyone, I want you to solve this. This question comes in the paper. हाँ जी सर. थर्ड का ऑप्शन में आपने लिखा है ना, सॉल्यूशन में लिखा अर्लियर द गैप वाज प्लस 500 एंड इट हैज बीन इंक्रीज्ड 2 होना था कि डिक्रीज 2 होना था. प्लस 497 डिक्रीज हो गया सर, डिक्रीज हो गया. जी सर. You decrease. Done sir. Now this only, see question number 1, 2, 3 I have already done. Just see question number 4 if you have understood this. In question number 4 we have different interest rates on different items. राहुल जी कल एनपीए किया था और एक छोटा सा प्रॉफिट प्लानिंग किया था, वो आपको मैं देखता हूँ, वो कल 100% रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएंगी, आप देखिएगा. சமீபத்தில் வெளிவந்த ஆறுமுகசாமி கமிஷன் ரிப்போர்ட் நான் சொல்றது கேளுங்க. அந்த பகுதி மக்களுடைய நாடி துடிப்பிலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து சசிகலாவை விசாரிக்க சொல்லியிருக்கு, விஜயபாஸ்கர் விசாரிக்க சொல்லியிருக்கு, சிவகுமார் விசாரிக்க சொல்லியிருக்கு, தாராகிருஷ்ணன் விசாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால்
எந்த விதமான ஆர்வசாமி ரிப்போர்ட்டே ஒரு பெரிய விமர்சனத்துக்குள்ளான ஒரு ரிப்போர்ட்டா இருக்கு. அது வந்து ஒரு தராசு பணியில் அதை எழுதியிருக்காரு. அவர் சசிகலா குற்றம் சாட்டினாலும் சரி, யாரை குற்றம் சாட்டினாலும் சரி, ஒரு காரண காலம் என்னோட சொல்லலைன்றது ஒரு பொதுவான ஒப்பீனியனா இருக்கு. பிரபல பத்திரிகைகளோட எல்லாமே சொல்றாங்க. ஆனால் விஜயபாஸ்கர் நீங்க குற்றம் காட்டும் போது அவர் எடப்பாடி அவர்கள் எந்த விதமான வாயையும் திறக்காத இருக்கார். அவருக்கான ஆதரவோ All right. Everybody, have you done this question? Now this question comes for 4 marks or sometimes 5 marks. Okay. Now, good. Now, एक मिनट. அந்த பகுதி மக்களுடைய உணர்வு அப்படிதான் சார் சொல்ல முடியும். நான் வந்து அகிலபதியை சொல்லல சார். அந்த பகுதி மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்றேன். இந்த காரணங்களுக்கு Now let us start with interest rate risk. And to start with interest rate risk, open your page number  माइक बंद करो यार सारे अपने प्लीज. Open your page number 27. What is interest rate risk? So, interest rate risk is where changes in market interest rates adversely affect the bank's financial condition. A most simple example, we have already done this. See here. ये वाला, if you remember, when your gap was positive and the interest rate went down by 2%, your NII reduces. And if the interest rate goes up, NII increases. This is an interest rate risk. You have taken an FDR and given a CC limit. Interest rate goes down. The interest that you will pay on FDR will remain the same. But the interest that you will get on CC will reduce. Or on floating rate home loan will reduce. It will impact your interest earnings. It is the risk of getting locked in wrong pricing positions by wrong pricing. It exposes the bank's financial assets to adverse movements in interest rates. Now, we will see what are the types of interest rate risk. There are 7 types of interest rate risk. Very important. Minimum 2 or 3 questions you will get from this page. सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर एक बार पेज नंबर बोलिए ना प्लीज. Ma'am, 27. Now, 27 now. Okay. First is gap or mismatch risk. A gap or mismatch risk arises from assets and liabilities with different principal amounts, different maturity dates, different repricing rates, thereby creating an exposure to changes in the level of interest rates. Now, what is this? Let us see. Now, this is my case study number 86. Okay, from this case study you will understand many things. Case study 86. Now, these are the 8 buckets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 buckets. If you remember how many buckets we had in interest rate risk? 8 buckets. Okay. This last bucket is non-sensitive. Now if you remember, in my previous example, I did cash, current deposit,
So cash is a non-sensitive asset. Current deposit is a non-sensitive asset. It has no relation with interest rates. Okay, so they will go in this non-sensitive bucket. Capital of the bank. You start a bank with some capital. If the interest rate goes up or down, will there be any change in your capital? No, there will be no change in your capital. Your old profits, that is your old reserves, there will be no change. Your fixed assets, are the fixed assets interest rate sensitive? No. You have a car, you have a furniture. If the interest rate goes down, क्या furniture की value कम हो जाएगी? No. Okay, so they are all non-sensitive assets. So non-sensitive assets go here. Rest, based on the maturity, you put the rate-sensitive assets and rate-sensitive liabilities in their different time buckets. For example, the first bucket is 1 to 28 days. Next is 29 days to 3 months. 3 months to 6 months. 6 to 12 months. 1 to 3 years. 3 to 5 years. Above 5 years. Like that. Now, let us see the first one. This is your rate sensitive asset. This is your rate sensitive liability. This is your gap, minus gap, negative gap. Negative gap क्या बोलता है? Negative gap tells me that my rate sensitive liabilities are more than your rate sensitive assets. So the management tries to minimize this gap. Why? Now let us see. Let us go back to my this slide. Let us say my rate sensitive asset is 100 and rate sensitive liability is 50. What is my gap? My gap is 50 plus 50. Now suppose the interest rate goes down by 2%, both sides, on assets and liabilities. What will happen? This will become 102 or 98, 49, and this will become 49, and this will become plus 49. So here I can say my NII has decreased. That means this is a risk. Whenever there will be a gap, bank is at risk, because if interest rate goes up, we benefit. If goes down, we suffer. But suppose my rate sensitive asset is 100 and rate sensitive liability is also 100. What is my gap? In that case, my gap will be 0. Yes or no? Yes, sir. Now, if interest rate goes down by 2%, what will happen? This is 102. This is also 102. Will there be any change in my gap? No, sir. No. yes, There is no change in my gap. Even if interest rate goes up by 2%. Sorry, ये up था, this is up, and now this is down. So 98 and 49, 98 and 98. Again, there is no change. So basically, this gap is creating the risk. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. This gap is creating your liquidity risk also. This gap is creating your interest rate risk also. So when we have to save ourselves from interest rate risk, we should try to minimize this gap. Is that clear or not? Here the gap is 0. So we are safe. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Now, in this case, your gap is minus 200 in the first bucket, 1 to 28 days. So, how can you control this gap? Either you reduce your liabilities or you increase your assets. So, what are your short-term
what are your short-term assets? Your short-term assets are call money or notice money. When you give money to another bank for one night, that is call money. 2 to 14 nights notice money. Now in that case, if you increase your lending by 200, your gap will go to 0. Is that clear or not? So this is what you have to try to do, that you have to try to keep this gap minimum. Now if you see, there are different maturity buckets. In different maturity buckets, you have different amounts, different repricing dates. Fine. This creates a gap. This creates a risk which is known as gap or mismatch risk. A gap or mismatch risk arises from assets and liability with different principal amounts, different maturity dates or repricing dates in a given time period, thereby creating an exposure to changes in the level of interest rates between assets and liabilities. The gap is the difference between value of assets and liabilities on which the interest rate is reset. So that means the gap is your rate sensitive. हम पढ़ रही है ना माँ पढ़ाई कर रही है ना गई गाड़ी लेने गई है इसमें नहीं The gap is your rate sensitive assets minus your rate sensitive liabilities. So first gap, have you understood? First gap, have you understood? Simple. Different principal amounts, different maturity buckets. Okay. Now, what is the second one? Basis risk. What is basis risk? Let us see. Now let us say this is your gap. Your rate sensitive asset is 100, rate sensitive liability is 80. Okay. But he says interest rate on assets go down by 0.5%, whereas interest rate of liability goes down by 0.75%. Alright. So now, 1 minute, just give me a second. So this is known as a basis risk. What is basis risk? When the interest rate on assets change by a different value and interest rate on liabilities change by a different value. This is known as a basis risk. Is that clear? Yes, sir. You want to note it down like this? This is also okay. Else you can simply read the theory from there. So what is basis risk? Basis risk is the rate of interest, the interest rate on assets and liability change in different magnitudes over a period of time. This is called basis risk. Is it clear? So different rate of interest for assets and liability. Yeah. Different magnitude. In assets, interest rate goes down by 0.5 and liabilities it goes by 0.75. This is basis risk. Next. Net interest position risk. What is net interest position risk? So look here. Now, here, your
Rate sensitive asset is 100, rate sensitive liability is 80. Your gap is plus 20. Plus 20 means we have more assets. Now assets are more, and if the rate of interest on asset changes, basically whichever thing is more, if the gap is positive, that means assets are more. And if the rate of interest on asset changes, assets are more, and rate of interest on asset changes, while the rate of interest on liabilities are the same. This is net interest position risk. Another example. Assets are 80, liabilities 100, gap is negative. Now we have more liabilities. Now if rate of interest on liabilities change while assets is same, this is a net interest position risk. Clear hai ki nahi? That means whichever thing is more, if assets are more and interest rate on asset increases or decreases, that is a net interest position risk. If liabilities are more, rate sensitive liabilities are more, and interest rate on assets or liabilities, or if liabilities are more, then interest rate on liabilities decrease, that is it. सर हिंदी दसो एक बार। हिंदी में ये है जी कि अगर गैप पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एसेट ज्यादा है। अगर एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी के मुकाबले, तो आपकी नेट पोजीशन क्या है? नेट पोजीशन है आपकी प्लस 20 एसेट, यानी आपके पास 20 के एसेट फालतू है, बाकी सारी बैलेंस होगी। देखो ना, 100 को मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 80, लिख सकता हूं कि नहीं? गुरप्रीत जी जब डाउट पूछते हो ना, यस नो यूज किया, फिर मुझे पता तो चले आप सुन रहे हो कि नहीं। तो ये 80 तो बैलेंस हो गए, तो यानी कि 20 के एसेट एक्स्ट्रा है ना जी। तो जो चीज एक्स्ट्रा है उस पे इंटरेस्ट हिल गया, मतलब एसेट एक्स्ट्रा थे और एसेट पे इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो गया, लेकिन लायबिलिटी सेम रही, तो इसे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। इधर आपका लायबिलिटी एक्स्ट्रा है और लायबिलिटी पे इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो गया, तो दिस इज योर नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। क्लियर है? सो व्हाट इज योर नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क? Banks net interest position exposes it to additional interest rate risk. If a bank has more assets on which it earns interest than its liabilities on which it pays interest, interest rate risk arises when interest rate earned on asset changes while the cost of funding the liabilities remain the same. ये देखो same. If bank has more assets, interest rate on asset changes while the cost of liabilities is same. This is a net interest position risk. Is that clear? Fine. The bank which has a positive net interest income, that means higher assets, will experience reduction in NII as the interest rates decline. This is the same thing. ये common sense है और इसकी टेंशन मत लो. Now this thing is simple. This thing is this example. If your assets are positive, interest rate goes down, your NII decreases. Interest rate goes up, your NII increases. Okay, you don't have to worry. In case he asks you a question, paper में कि you have a bank has a positive gap, that means rate sensitive assets are more, and he says that what will the NII improve or decline if the interest rate goes down? So don't worry, you don't have to remember anything. Simply do this question. Just एक example ले लेना, that gap is plus 50, that means this situation. If interest rate goes down, but अपने paper पे calculation कर लेना 2%, this becomes 98, this becomes 49, so this is plus 49, that means NII decreases. Is that clear? So that you don't have to memorize anything. And if he says goes up, then use this one, NII increases. If he says that a bank has more rate sensitive liabilities, more rate sensitive liabilities means negative gap, that means this is the case. And if he says interest rate goes down, reduce
both sides by 2%. 2 नहीं करना 10 कर लो यार, simple है 10% कर लो. If this is your case, your gap is 100 minus 50, or let us say your gap is 50 minus 100. Your gap is negative 50. Fine. Now, if he says what will be the effect if interest rate goes down, so just do a rough calculation on your paper. 10% की calculation कर लो. So 50 का 10% reduce कर दो. This is 45. This is 90. So this will be minus 45. So basically your NII has improved. Is that clear? Is it clear? Yes, no? Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yes, sir. This kind of theory question can come. You can simply check it like this and give the answer. Next, embedded option risk. What is this embedded option risk? Now, embedded option risk is whenever you give a loan, so you are a bank, you have taken a 3-year FDR, okay, and you have given a 3-year loan. Now there is a interest rate risk. Suppose if FDR goes out premature withdrawal, or there is a prepayment of loan. This is known as an embedded option risk. Now please be very careful. Premature withdrawal in interest rate, it is an embedded option risk, and premature withdrawal in liquidity, it is a funding risk, if you remember. Sudden outflow, you have to replace outflow, याद आया? हाँ सर, लिक्विडिटी रिस्क में भी है. लिक्विडिटी रिस्क में भी होता है ये. उधर इसे फंडिंग रिस्क बोलते हैं, इधर इसको एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क बोलते हैं. In your exam, the moment you see an option of premature withdrawal, immediately a prepayment of loan, and he asks you which interest rate risk is there, simple answer is embedded option risk. Okay? Now, next. So what is embedded option risk? Large changes in level of market interest rates create another source of risk to banks' profit by prepayment of loans, okay, or premature withdrawals. This is known as a embedded option risk. Then sometimes they ask you a question, how does a bank save itself from embedded option risk? So in case of premature withdrawal, you impose penalties. Whatever is the FDR interest, you charge 1% penalty on the interest. याद है कि नहीं? करते हो कि नहीं? Yes sir. Yes sir. Okay. And some banks, India RBI doesn't allow, but in some banks they allow penalty on prepayment of loans. Many banks stipulate a pre-closure penalty to cover up embedded option risks. Okay. Then next, what is a yield curve risk? Now this question comes, what is a yield curve? सबसे पहले ना, you understand what is a yield curve. Just I go to Google.
and I type yield curve. This is a yield curve. Now see here. On the left side you have the interest rates, yield. On the right side you have maturity period. So this chart tells you what are the different interest rates at different maturities. Are you getting me or not? Okay. So basically we will see that for a 3-month what is the interest rate, for 6-month bond what is the interest rate, for 1 year what is the interest rate, for 5 years what is the interest rate, for 20 years or 10 years what is the interest rate, like this. Your entire planning is based on the yield curve. RBI अच्छा this yield curve changes. No, ये देखो ये होगा इधर. ये देखो ये this is your Indian yield curve. ये देखो ना ये see if you see this is a very small image. ये देखो for a 2 year the yield is around 4.2%. For 4 year item yield is around 5%. For 6 year the yield is around 6%. For 10 year yield is around 6.2%. Can you see this? Everybody, can you see this? Yes, sir. ठीक है, ये yield curves जो होते हैं ना, they change shape according to the economic cycle. For example, you type yield curve in recession. So in recession, the yield curve is inverted. This is an inverted yield curve. See this. This is a normal yield curve like this. This is an inverted yield curve. Mostly in recession, the yield curves are inverted. When short-term interest rates are high and long-term interest rates are low. So today, either Canada में short-term interest rates are very high, but long-term interest rates are still very low. That means the yield curve is inverted. Inverted yield curve means that economy is going to enter recession. So US, Canada, Europe का तो वैसे ही बुरा हाल है, ठीक है? So US, Canada, they will enter recession by January.
Are you getting me? So this curve says that short-term interest rates are high and long-term interest rates are low. So all your planning is based on these yield curves. So this question can come, what is a yield curve? A yield curve is a line on a graph plotting the yield of all maturities for a particular instrument. Yield curve changes its slope from and shape from time to time and depending on repricing and other such factors. As economy moves through business cycles, the yield curve changes frequently. At intervention of RBI can also change the yield curve. At intervention of RBI, the yield curve can be twisted in desired direction by changing the yield on government stocks of different maturities. If RBI wants to change, RBI can simply play with the interest rates and RBI can change the yield curve. Now, if yield curve changes and your entire planning goes haywire, this is a yield curve risk. Is that clear? Next, what is a price risk? Now see this. Our Mr. Pankaj has given 1,000 rupees to Government of India and he has purchased a 10-year treasury bond with a coupon of 7.5%. That means government will give him 75 rupees interest for next 10 years, yes or no? Okay. Now suppose RBI increases the rate of interest. RBI increases repo, reverse repo, everything. Now the law says that whenever the interest rates goes up, bond price goes down. So when RBI picks up the interest rate, bond price goes down to 995. If Pankaj does not sell, he will get all the 75 till the end, he will get his full return. Yes or no? But suppose Pankaj sells today, he will have a loss of 5 rupees. This is a price risk. Is it clear or not? Due to changes in interest rate, the price of bond went down. And if he sold at the low price, this is known as the price risk. Clear hai कि नहीं? Clear है sir. Read it. What is price risk? Price risk occurs when assets are sold before maturity date. For example, a treasury bill with 10% yield with 10% 10-year maturity is held until maturity. If it is held, if you buy a bond and you keep it till maturity, you will get the full value. But suppose interest rate goes up and the value comes down and you sell it at a lesser value, that is a price risk. If the holder has to sell before the maturity, he may have to sell it at discount, okay, because the rates are higher. This phenomena where the price of instrument or realizable value of instrument is at risk is called price risk. Last is reinvestment risk. What is reinvestment risk? Avida dekho. Look here. A bank took an FDR at 5% for 1 year. And this bank gave a loan at 10% for 2 years. So what was the spread of the bank? 5%. Now after 1 year, this FDR matures and the person reinvests it, and today the rate is 5.5%. Now the spread will reduce to 4.5. This is a reinvestment risk. Is it clear? Sir, one more time. Ma'am, you've taken an FDR at 5% and given a loan at 10%. What is your spread? 5%? Yes, sir. Now suppose after 1 year, the rate of interest go up and the person simply renews the FDR at a higher rate.
your spread reduces to 4.5. Yes, sir. This is a reinvestment risk because he reinvested at higher price. So this is your reinvestment risk. I would request everybody to read these risks once again right now. सर वो स्लाइड दिखाइए ना प्रीवियस वाले. Have you read these 7 risks? एक बार इनको read कर लो. They are very important. And now this portion you will read at your home. You can get one theory question from here. Now have a break for 5 minutes, not more than 5. Okay? जल्दी break करिए, जल्दी इसको खत्म करेंगे. Have a break for 5 minutes. Then we will start with this
the interest rate part from the module T. थोड़ा सा रह गया. And next, I think क्या time है? It is 8:45. Yeah, by around 1 hour we should be able to finish it. 5-minute break, please. Recording stopped. அப்புறம் பண்டிகை நாளில் ஏகப்பட்ட சண்டை பிடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் எங்கள் கார் கவர் எல்லாம் இது போட்டு நாத்தனை போனால் யாராவது போட்டு வெடி போட்டு அதெல்லாம் எரிச்சு போச்சு. கொஞ்சம் எல்லாம் பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டாக ஆயிருக்கும். அதான் போய் வீட்டுக்காரரும் சொல்லிட்டேன், இது மாதிரியெல்லாம் இது பண்ணிகிட்டெல்லாம் இருக்குது, அக்கம் பக்கத்தில் சண்டை எடுத்துக்கிட்டு இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கலாம் இருக்க தேவையில்லை, அமைதியாக இருக்கிறதுனா எங்கள் வீட்டில் இருக்கணும். கொஞ்ச நாளாக நல்லாவே இல்லை, உங்கள் வீடு சவுண்ட் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாகவே இல்லை, உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன். நான் அதுக்கு என்ன சொன்னாருங்க, நான் ஒன்றும் சொல்ல பேசாமல் இருந்தாப்புல, இந்த கவருக்கு மட்டும் வாங்கி தந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டாப்புல, பேர் அனுப்புனா நான் வாங்கி கொடுத்துறேன்னாப்புல அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ரேவதிக்கிட்ட நம்ம கொஞ்ச நாளில் வீடு மாற்றிக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னாப்பிள்ளைங்க, கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாப்பிள்ள, தாராளமாக போட்டோம். இது வந்து லப நாங்கள் பெரிய இதாக ரொம்ப சந்தோஷம், சும்மா இருந்தாவோட பரவாயில்ல. அது போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே சொல்லிட்டாங்க, சரியான பஜாரியாக இருக்குது இந்த பொம்பளை. 2-3 நாள் ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து பேசுகிறத பார்த்து அப்பா செம பஜாரி பொம்பளை இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க. அதான் இப்போ மரியாதை கொடுத்தாரு, நான் அவைவன் தான் பேசுகிறேன், நீங்கள் வந்து பசங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்து பார்த்துட்டு பிள்ளைங்க அதுதான் ப்ரெட்டை தான் தராங்கம்மா, சமைச்சே தர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னோம். அப்புறம் வந்து நான் இட்லி சட்னி எல்லாம் செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனாங்க. அந்த பொம்பளை இல்லையாண்ணா அவர் இருந்தாங்க, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, மரியாதை எல்லாம் பேசுகிறேங்க. அப்படி இல்லை அது வாய்க்கு என்ன சொன்னாலும் அடுக்கும் இந்த ஆக்கெல்லாம் பேசாமல் தான் ஒரு ஸ்டேஷன் வந்து இனிமேல் எங்கள் அம்மாவை நான் இதாக பார்த்துக்கிறேன், தொந்தரவு பண்ணாத மாதிரி அப்போ எழுதி கொடுத்துட்டு தான் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு. அதான் சொன்னேன், எப்படி உங்களுக்காச்சு உங்கள் வீடாச்சுங்க இது பண்ணுறத பார்த்தா எல்லாம் அக்கம் பக்கத்தில் என்ன நினைப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் இருந்தவங்க யாரும் இந்த மாதிரி இது ரகலை பண்ணிட்டு இருந்ததில்லை. இதில் வேறு போட்டு அன்றைக்கி நாங்கள்லாம் பார்க்காம தான் பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கும், கார் வெடித்து வீடெல்லாம் இது பண்ணி தேவை அதெல்லாம் எங்களுக்கு அப்படின்னா சொல்லிவிட்டேன். நான் போய் க்ளீனாக உங்களுக்கு இஷ்டம் தான் இருங்க, அமைதியாக இருக்க முடியும்னா இருங்க, இப்படி அக்கம் பக்கத்தில் சண்டை எடுத்துக்கிட்டெல்லாம் எங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது, ஷிஃப்ட் பண்ணிக்காங்கல்லண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டேங்க. அதான் ஹவுஸ் ஓனருக்கு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் கால் பண்ணிக்கிறோங்க அப்படின்னு ரேவதிக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாப்பிள்ளைங்க. அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் கேட்டேன் மேடம்னாப்பில். அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க, நான் இஷ்டம் இருந்தால் இருங்க, அமைதியாக இருக்கிறதுனா இருக்கணும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு இஷ்டம்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு காலியாக இருந்தால் கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இது மாதிரிலாம் அக்கம் பக்கம் சண்டை எடுத்துகிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது, பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்க. இவரெல்லாம் விட்டுருந்தா சண்டையே நடந்திருக்கும், அதனால் நான் மட்டும் போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன். என்ன சொன்னார் என்கிட்ட ஒன்றும் சொல்ல அமைதியாக மட்டும் கேட்டுட்டாப்பில்ல, கவர் மட்டும் என்ன சொல்கிறாங்க இருக்குன்னா வாங்கி தந்துடுறாங்கனாப்பில். அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ண கேட்டுக்கணும் கேட்டேன். அப்படியே எங்கள் அத்தை போய்ட்டு பேரண்ட் மேடம் போய்ட்டு வாங்குறாங்க, எப்படி போய் நான் விட்டு போக முடியுமா, பசங்களை இங்கே அனுப்பி விடுங்க, அப்புறம் வந்துட்டு போட்டுன்னு சொல்கிறோம். அதெல்லாம் பசங்க அனுப்பவே முடியாதுன்றாங்க. அவங்களும் வீடே வாங்கிட்டு போகிறாங்க, மாமியார் வீடு தேடிட்டுருங்க, அந்த வீடை பார்த்து பிடிக்கல, இந்த வீடை பார்த்து பிடிக்கல, என் பையன் மொபைல் பார்த்து என் பையன் போட்டு வரேன் உடனே வாங்கிடுறப்ப நீங்கள் வேறு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னாப்புல. ஏதோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, தாராளமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரொம்ப சந்தோஷம் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நானும் அப்படின்னு சொன்னால். இந்த வீடு மாதிரியே வேணுமா, நல்லா இது மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வேணும்னு தேவை கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க மாமியார். ஃபுல்லாக பெட் ரிட்டனாக இருக்காங்க, விட்டாரு இந்த பந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே பண்ணுவேன், மேலே பண்ணுவோன்ட்டு டெய்லி இது கேட்பேன். இப்போ அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் பேசுகிறவங்கள ஆஃபீஸில் வந்து இவரையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. அப்போ அப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டான்னு சொல்லி நானே 9 மணிக்கு மேலே பண்ணியிருக்கேன், நீங்களே பண்ணிட்டீங்க இல்லை இப்படி சொல்லிச்சு ரேவதியே. அதுதான் கேட்டேன் நம்ம நாட்டில் தெரியல, எங்கள்கிட்ட எதுவும் அது சொல்லலை, ஆனால் நான் இப்படி சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். அதுக்கு முன்னால் தான் அவங்க வீடு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, வீடு பார்த்து நாங்கள் இது பண்ண போகிறோம். எங்கள் பையன் கோட்டீஸ்வரம் ஒரே இதில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா கோட்டீஸ்வரம் என் பையன் கோட்டீஸ்வரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ ஏன் மேடம் நீங்கள் வேறு இது 2 ദിവസം நல்லா இதாக இது பண்ணிக்கிட்டு இதாக இருந்துருக்குறாங்க. அந்த நம்ம நாத்தனார் பொண்ணு எல்லாம் நீங்கள் நர்ஸுக்கு சண்டைக்கு போயிட்டாங்க. அதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தான் நடந்துருக்கோம்.
हाँ जी सौरभ जी बोलिए। नहीं सर, आई एम बैक। अच्छा चलिए। Recording in progress. Vedar, open your page number 76. So this first part, ये वाला, if you see, this is written again. ये वही है जो मैंने अभी आपको I told you to read on your own. Fine. This was written on the previous page also here. Now come to interest rate mitigation techniques. मैडम निकिता देखो, embedded option risk है। Interest rate risk में whenever there is any prepayment of loan or any premature withdrawal of deposit, that is known as embedded option. और gap risk का है ये जो हमने किया था, ये जो केस स्टडीज की थी, in different buckets are different time periods, different maturity amounts. This is a gap. So with this gap is, we have to minimize the gap. This is basically the gap risk. Now सर ये सब का डिफरेंस नहीं पता चल पाता, एग्जाम में आया था ना सर, मतलब इस तरह। गैप रिस्क क्या होता है, क्या आया था क्वेश्चन बताओ। बेसिस रिस्क भी ऑप्शन में था, फिर ये नेट इंटरेस्ट। मैंने आपको अभी आप क्लास में नहीं थे, मैंने पूरा करवाया। हाँ, ये मैंने पूरा करवाया कि बेसिस रिस्क क्या होता है। बेसिस रिस्क होता है कि जब एसेट पे इंटरेस्ट अलग वैल्यू से चेंज हो जाए और लायबिलिटी पे इंटरेस्ट अलग चेंज हो, वो बेसिस। कंफ्यूजिंग लग रहा था सर, मैं समझ में आया था कि कौन सा होगा बेसिस रिस्क होगा, ये नेट इंटरेस्ट। हम जब बेसिस रिस्क क्या होता है, बेसिस रिस्क की है जब एसेट और लायबिलिटी पे इंटरेस्ट अलग अलग वैल्यू से चेंज हो, उसे बेसिस रिस्क बोलते हैं। नेट इंटरेस्ट पोजीशन आपने सुना है मैम, जो मैंने अभी इतनी डिटेल में किया था। आई स्पेंड 1 आवर। यस सर, लेकिन एग्जाम में अंदर जैसा कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैम कंफ्यूजिंग नहीं, इसको आपको रिवाइज कीजिए ना। जब आप रिवाइज करोगे, जो आपको कंफ्यूजिंग लगता है उसकी वीडियो दोबारा देखिए। ओके सर। Now, interest risk measurement techniques. एक तो क्या है यार, this gap analysis we have already done. Positive gap, negative gap. Then in positive gap, if interest rate goes up, what happens if it goes down? We have done 2 case studies also. All right. Then in this repricing schedules, it is a simple exercise of assigning or distributing interest rate sensitive assets or liabilities to different time bands. What are different time bands? Different time buckets. Idhar dekho, this one. This is a case of calculating interest rate risk as per different repricing schedules. So these are your 8 time buckets. Clear ho gaya ki nahi? Acha, let us first do this case study first. Case study 86. He says if the interest rate falls by 25 basis points in first time bucket, what will be the impact on net interest income? This is NII. This is NII of the bank. Now if you see in the first bucket, your assets is 100, 800, liability is 1000, gap is minus 200. Okay, if the interest rate goes down by 0.25%, what will be the impact? Tell me. ये हो जाएगा 800 into 0.25% minus equal to, and 1000 into 0.25% minus equal to. Check that. What is the new gap? Tell me.
0.5 sir. What is a new gap? Gap बताओ मुझे, नया gap कितना आएगा? बी ऑप्शन 499.5. Okay. Minus के plus? Minus sir. Minus. So that means your overall NII has improved by how much? 0.5 crores. Is that clear or not? Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Next question. Madhu Sai, please mute your mic. Now, in terms of extant RBI guidelines on ALM, अच्छा ये छोड़ दो. Second question, please leave it. Now, what is the total rate sensitive asset of the bank? Now see, total asset is of the bank is 6,500, out of which 300 is non-sensitive. So out of total assets, if you remove the non-sensitive portion, what you are left with is rate sensitive assets. So rate sensitive asset will be 62 crores, 6,200. Is that clear? Now, next question. In rising interest scenario, bank will have dash impact if on the interest rate changes. Now look here. What is your gap here for the whole bank? So gap means RSA minus RSL. Gap means gap is your RSA minus RSL. Now in this case, tell me, what is your gap? How much is your gap? So 6,500 minus 300, because gap was RSA. This is 6,200. और liability कितनी है? 6,000 आ जाएगा सर, minus 500 करके. Okay. So this will be 6,200 minus 6,000. That means you have a positive 200 gap. Is that clear or not? Is it clear? Now, if your gap is positive and interest rate goes up, will it benefit you or will it go against you? Benefit. Yes, sir. It will benefit you. Simple so logic है. If your RSA is 100 and gap is RSL is 50, gap is plus 50, and if interest rate goes up by 10%, that is 110, this is 55. Overall, it is plus 55. You have benefited. So answer is benefit. Is that clear? Your NII will improve. Is that clear or not? क्लियर सर. फेवरेबल हो जाएगा ना सर, 4 बाय. हाँ, फेवरेबल हो जाएगा ना सर. जी. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट अस डू वन मोर केस स्टडी. Do this case study 84. Everybody. इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं करो. कंप्लीट केस स्टडी. डू इट प्लीज. அது அவங்க இப்போ இதுன்னு தெரிஞ்ச நல்லா தான் இருக்குது காற்று.
கல்யாணத்துக்கு போறக்கா gift பார்த்து செல்வா இது உங்களுக்கு என்னோட சின்ன gift. என்ன சொல்றீங்க கிஃப்டா எனக்கா என்ன இருக்கு இதுல ஓபன் பண்ணி பாருங்க. Sir, my connection was lost. Sir, what topic you have started now? I'm interested risk पे ही है. So I asked one question. Actually, I am unable to understand what is embedded loss of interest. Embedded option risk is ma'am interest rate risk में whenever there is a case of premature withdrawals on FDRs, deposits or prepayment of loans, that is known as under interest rate risk, that is known as embedded option risk. Sir, actually जो आपने effects of interest पढ़ने के लिए था तो उसमें एक लास्ट एक लॉस है embedded loss. सर वो चीज मेरे को कहाँ पे मैम? जो आपने कहा था ना कि वो घर पे पढ़ना मीन्स वो इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसको एक बार रीड कर लेना ना घर पे. वो मैं एक्चुअली पढ़ रही थी तो मुझे अब जो मैं करवा रहा हूँ उसको पहले करो ना. अभी आप कुछ मैं आपसे वही पूछी अभी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया था स्टडी 84. तो मेरा नेट प्लीज फिनिश दिस केस स्टडी. सर इसका फोर्थ वाला बता दोगे सर एक बार. फोर्थ वाले में कंफ्यूज है थोड़ा. जो ऑप्शन है ना फोर्थ वाला फेवरेबल एडवर्स न्यूट्रल वाला. इधर देखो सर. Now first question है if there is a fall in interest rate by 25 basis points in third bucket. Okay, 3 to 6 month bucket. ये हो जाएगा. Question number 1 is open to everybody. Okay sir. Question number 2. Total rate sensitive liability of the bank is. So total liability is 11,500 minus non-sensitive. So that means 10,600. जी sir. This is also okay. Next. Total rate sensitive non-sensitive सर इसमें non-sensitive liability और asset कैसे find out करेंगे? ये देखो सर non-sensitive bucket. The last bucket is non-sensitive bucket. ठीक है. Okay. Then question number 3. What is the total of rate sensitive assets of the bank? It is 11,500 minus 700. That is 10,800. Last. If there will be if there will be dash impact on the bank if it's a declining scenario. Declining scenario means interest rates are going down. अब इधर देखो पहले इस बैंक का गैप निकालो. What is the gap of this bank? Gap means RSA minus RSL. Your RSA is 10,800, RSL is 10,600. So that means you have a positive gap. Yes sir. You have more assets if your gap is positive and interest rate goes down. आपको benefit होगा कि loss होगा? Benefit होगा सर. यार ये देखो इधर सुनो. अब सिंपल एक चीज समझो. मुझे तो सिर्फ इतना सा एक एग्जांपल समझ आता है पॉजिटिव गैप. मुझे तो इतना पता है कि पॉजिटिव गैप का मतलब होता है that 100 minus 50. This is my standard example. So gap कितना मेरा +50 है? जी सर. Now if suppose interest rate goes up by 10%, suppose. So ये 110 हो गया, ये 55 हो गया. Gap increases. Gap increase हो गया ना? हाँ जी. Favorable हुआ ये favorable होगा. हाँ जी. और अगर 10% कम हो गया, तो 100 का 90 हो गया, 50 का 45 हो गया. 45 हो जाएगा. गैप कितना हो जाएगा? +45. तो बताओ आपकी सिचुएशन खराब हुई है कि बेटर हुई है? खराब हुई सर. एडवर्स हुई. There you go. ये रहा आपका बैंक को लूज. समझ आ गया सर कि नहीं? ओके सर. आगे सर. तो प्लीज सर तो 4 का आंसर एडवर्स हो जाएगा ना? हाँ जी एडवर्स हो जाएगा. सर फर्स्ट के परसेंटेज को थोड़ा बता दीजिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है. क्या चीज मैम?
ये जो कौन सा? फर्स्ट हुआ जो फर्स्ट वाला है सर, ये थर्ड बकेट वाला 25 bps। मैम थर्ड बकेट, ये रही मेरी थर्ड बकेट। इन थर्ड बकेट व्हाट इज माय एसेट्स और RSA 2800, व्हाट इज माय लायबिलिटी 3400, सो व्हाट इज माय गैप -600। अब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फॉल्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, सो 2800 में से 0.25% कम करो, कितना होगा? 2730। इतना ज्यादा नहीं हो सकता मैम। 2.5% ही करना है ना सर? मैम 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब कितना है? 2793। हाँ जी 2793 पॉइंट तो नहीं आएगा? पॉइंट नहीं है सर, पॉइंट नहीं है। And 3400 into 0.25% minus equal to कितना आएगा? 3391.5। 3391. So what will be the new gap? 598.5। 598.5. So that means your position is increasing by plus 1.5 crores. थैंक यू। तो नीचे वाली स्लाइड बता दें। कौन सी सर? जो अभी करवाई सर, एक और नीचे। ठीक है सर, हो गया। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो अलग अलग आपने करवाया था, इसे तो गैप पर भी डायरेक्ट 0.25% लेकर कर सकते हैं। कर सकते हो सर, मैं नहीं करता, मैं अलग अलग ही करता हूँ, आप कर लो सर। वो सिंपल हो जाता है सर, इजी नहीं होगा वो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप गेन लॉस में फंस जाओगे। मेरे को एक सिंपल, मैं अपनी जिंदगी को आसान करना चाहता हूँ। Why should I make my life more difficult? I simply do this, मुझे यहाँ से क्लियर पता चल जाता है, न्यू गैप इज -598, ओल्ड गैप वाज -600, that means my NIA is improving by 1.5 crores. Now, so this case study was of repricing schedule, gap analysis. We have done all the case studies. Now, सर इसका पेज नंबर क्या है? 76. Now look here, on page number 77. What are your strategies for controlling interest rate risk? This question can come. The first step is to analyze and identify assets and liabilities which are interest rate sensitive. First आप देखोगे what all assets and liabilities you have that are sensitive to interest rate. Then you will study their maturity patterns, what time they are maturing. This is one method. Okay, and to study their maturity patterns, bank rely on historical behavior of these assets and liabilities. Then he says, once you have identified the rate sensitive items, then your focus should be to control the gap between RSA and RSL. हमने किया था ना, if the gap is minimum, only then you can control the risk, yes or no? I told you this example, that how will you control the gap if your gap is 0? I told you this example ना। Yes sir. कि ये देखो ना, सपोज करो योर गैप हियर इज 100 minus 50, that is plus 50, and if interest rate goes up by 10%, suppose karo, so this is 110 and 55, there is a very big move. If it goes down by 10%, then this will be 90 minus 45 minus 40 or plus 45, very big move. But suppose my gap is 100 minus 100, 0. Now if interest rate goes up by 10%, still it will be 110 minus 110, gap will be 0. If it goes down by 10%,
still it will be 90 minus 90, 0. Are you getting me? Yes, so I should try, if I really want to control my interest rate risk, I should try to reduce this gap as much as possible. Is it clear or not? Yes, sir. सर इसमें जीरो गैप जीरो रहेगा तो बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा सर। क्यों नहीं बढ़िया रहेगा? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीरो गैप पे आपको लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। How will you manage how will you lend money to and increase your profits? So basically you have to create a balance. Zero, for interest rate point of view, zero gap is very good. Okay, so this is what he says, that having identified the rate sensitive items, the bank should focus on controlling the gap between RSA and RSL. Most banks endeavor to match the assets and liabilities as closely as possible in order to reduce the gap to zero and insulate the NII from volatility in interest rates. Is that clear? ठीक है, अब इधर देखो. Now suppose this is the case. Now इसमें simple है. If he asks you that how will you reduce this gap in the first bucket, so best is either you reduce your RSL by 300 or you increase your RSA by 300. How will you increase your rate sensitive assets by 300? By giving more call money loans in the first bucket. Okay, so suppose karo in this 3 to 5 years or in above 5 years bucket, you have a gap of plus 800. Okay, so how can you reduce this gap? By increasing liabilities. A breakthrough that has a far-reaching impact FDRs, from you boosting can take FDRs for 800 crores, deposits for 800 crores whose maturity is above 5 years, and your gap will be covered. Is it okay or not? Yes. Sure. Now, come down. Guidelines for constructing statement of interest rate sensitivity. Now these are our 8 buckets we have already done. These are my 8 buckets we have already done in the case study book. Now he says this page you have to remember, everybody. Capital, reserve and surplus, they are part of your liabilities. And they are kept in non-sensitive bucket. Capital or your old profits or your present year profit or your reserves, they are not sensitive to interest rate. Current deposit, again current deposit is non-sensitive. Then saving bank deposit. अब इधर देखो प्लीज. इन सेविंग बैंक्स पहले क्या होता था? Everybody please listen to me and mute your mics. In saving bank earlier what used to happen कि how 10-15 years back how did you calculate the interest on saving bank? अब करते थे कि between the 10th day and the last day, whatever is the day on which there will be minimum balance in the account, based on that you will pay interest. याद आया कि नहीं? That means suppose Mr. Raghuveer has 100 crore in his saving bank account and on 15th he withdraws 99 crores and on 17th he again deposits his 99 crores back. You will pay him interest only for 2 crores because the minimum balance was 1 crore because the minimum balance was 1 crore between 10th and fine. After that RBI has told that this method is not good, you have to pay interest on daily basis. Yes or no? Daily basis. Yes. Fine.
तो ये पहले का ही है, पुराना ही, अभी तक देयर इज नो चेंज दैट। वो कहता है कि इन द सेविंग बैंक केस whatever is your interest paying portion that you have to put in 3 to 6 month bucket, and if there is a non interest paying portion that you will put in non sensitive bucket. So in the paper he will give you that what is the sensitive or non sensitive portion. Sensitive portion will go in 3 to 6 month bucket. Then for FDRs, they are sensitive on maturity. FDRs are sensitive at maturity. Any borrowing, if it is a fixed rate borrowing, sensitive at maturity. Any borrowing which is a floating rate, sensitive whenever the interest rate changes, interest reset rate. Borrowing zero coupon, again sensitive on maturity. Borrowing from RBI up to 1 month bucket. अच्छा, ये क्वेश्चन आया था। Other liabilities and provisions, bills payable, inter-office adjustment, provisions, etc. They are all non-sensitive. Interest rate has no effect of these things. Then cash is a part of assets. Cash is non-sensitive. Then your balance which is with RBI, the portion of which RBI pays you interest will go in 3 to 6 month bucket. The balance will go in non-sensitive. Balance with other banks which is in their current account, non-sensitive. Money that you have given to other banks on call short notice based on maturity, sensitive on maturity. सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये बैलेंसिंग विद आरबीआई है, यहाँ पर इंटरेस्ट अर्निंग पोर्शन में भी शोन इन ओवर 3 to 6 month buckets. हाँ जी, जो भी जिस पोर्शन पे आरबीआई इंटरेस्ट देता है उसे 3 से 6 महीने में डाल दो, जिस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता उसे नॉन सेंसिटिव बनाओ। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये सेंसिटिव एट मैच्योरिटी एंड सेंसिटिव एट नेक्स्ट रीप्राइसिंग, ऐसे अलग अलग सेंसिटिव। हाँ हाँ, वो है, पर है सेंसिटिव ही ना सर। जो तो फिक्स रेट है, जो तो फिक्स रेट बोरोइंग है, जो तो फिक्स रेट है, दैट विल बी सेंसिटिव ऑन मैच्योरिटी। और जो फ्लोटिंग रेट है, सो व्हेनेवर द इंटरेस्ट रेट चेंजेस इट विल बिकम सेंसिटिव। ओके सर, ओके। नाउ सर ये जीरो कूपन क्या होता है सर? आई लव यू ऐसे क्वेश्चन मत करो यार, आपको डरा देता हूँ। एबीएम की क्लास में नहीं सर, नहीं सर, नहीं। सर जीरो कूपन होता है, कूपन बॉन्ड जो इंटरेस्ट देते हैं उसे कूपन बोलते हैं। जीरो कूपन होता है जैसे ट्रेजरी बिल होते हैं जो इंटरेस्ट नहीं देते। मैं आपको कह देता हूँ ऐसे करो, मेरे से 100 रुपए की चीज ले लो, पर 100 रुपए आज दे दो, और सॉरी आज मुझे आप 98 रुपीज दो, 3 महीने बाद मैं आपको 100 रुपए दे दूं। तो इसके अंदर इंटरेस्ट छुपा होता है, लेकिन कोई सेपरेट इंटरेस्ट नहीं होता। लास्ट टाइम था मतलब क्वेश्चन है जीरो कूपन के ऊपर एबीएम में। तो सर ये नॉन सेंसिटिव हो गया ना? नहीं सर, सेंसिटिव है। सेंसिटिव हो गया, मैच्योरिटी पे सेंसिटिव हो जाएगा। मैच्योरिटी पे सेंसिटिव। नो, मेरे को 2 केस स्टडीज करनी है। एक तो सिंपल है, सर ये पिछली स्लाइड, अभी जो स्लाइड जो दिखाए हैं आप, हेलो सर, इसमें मुझे एक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। बैलेंसेस विद आरबीआई का सर सीधी सी बात है, आप याद कर लेना सर कि जिस पे कैश, जिस पे इंटरेस्ट देगा आरबीआई उसको 3 से 6 में डाल दो, बाकी अब नॉन सेंसिटिव में रख दो, बस खत्म हो गया। अच्छा, ओके सर, ओके। డార్లింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మొబైల్స్ కొని చూసే దీపావళి సేల్ 100 కోడి పరిశ్రమ
மழை வழங்கும் மீனாட்சி பொன்னுலாகும் presented by தமிழ்நாடு சத்யா உங்கள் வீடெங்கும் சத்யா தீபாவளி கல்ச்சர்ஸ் பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆனந்தம் சில்க்ஸ் ராமநாதபுரம் கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் ராஜபாளையம் புதுக்கோட்டை மற்றும் கடலூர் இடைவேளைக்கு பிறகு நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் உதவி செஞ்சுக்கிட்டா நம்ம டீம் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். இந்த மாதிரி டீமுக்காக அயன் மற்றும் ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள சர்வீஸ் மாதிரி லைட் ஒவ்வொரு வீட்டின் விருப்பமும் ஒரு ஸ்ட்ராங் டீம். Come to case study number 91. Take the phone. என்னமா ஜொலிக்குதுல்ல ஜொலிக்கிற எல்லாருக்குமே ஆசைதான். இந்த ஜொலிப்போட சீக்கிரம் சந்திரிகா சோப்புல தேங்காய் எண்ணெய் 7 அத்தியாவசிய மூலிகைகளும் 2 மடங்கு தேங்காய் எண்ணெயுடன் கூடிய சந்திரிகா ஆயில் உங்களுக்கு சருமத்தின் ப்ராப்ளம் ஃப்ரீயாக்கி நேச்சுரல் ஜொலிப்பை வழங்குகிறது. சந்திரிகா ஜொலிந்த நேச்சுரல். நல்ல டீ எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஆனா உயர்தரமான டீ கட்டுப்படியாகும் விலைக்கு கிடைக்காது. இப்போது இவை இரண்டும் டாடா டீ கண்ணந்தேவன். இது பிரபல கண்ணந்தேவன் தோட்டத்தின் சிறந்த மனம் மற்றும் புத்துணர்வு சுவை கொண்டது. அதுவும் சிறந்த விலையில். டீயை பார்த்தாவது என்ன செய்யுங்கள், வாங்குங்கள். டாடா டீ கண்ணந்தேவன். This portion ये जो चार्ट किया था इसमें what all I have highlighted, आवाज आ रही है? This you will remember. You can get a theory question out of this. Now last में है एक केस स्टडी है. This is a very difficult case study. इसको रट्टा मारना. You just have to learn it. 5 questions. 100% every exam this question comes. Okay, means if you have to understand this case study, it will take at least 5 hours to understand this case study, and even after that you will not understand this. So best is just memorize it and end the story. Now ये ना आपके formulas हैं. First, note down these formulas. This is a case study on modified duration of equity. It is different, so please don't confuse it with any other thing. First is your risk weight. It is RSL divided by RSA. This risk weight is written as this W. It is written as this W. Then you have modified duration gap. MD gap is modified duration gap. It is duration of assets minus this risk weight into duration of liabilities. Then you calculate leverage ratio. That is your rate sensitive assets divided by net worth. Net worth is tier 1 plus tier 2. Then you have modified duration of equity, duration gap into leverage ratio, change in equity value, percentage change in equity value, that will be given in question, into modified duration of equity. Modified duration of equity
calculate from the previous question. Memorize these 5 formulas and you will earn 5 marks. Don't ask me why, how. Okay, बस इसको वो simplex method वाला याद है question? Where I told you don't ask me why and how, just do it. बस ऐसे ही कर लो इसको याद. पहले note down these formulas. नेट वर्थ के अंदर ब्रैकेट में T1 प्लस T2 टाइम पीरियड टायर 1 प्लस टायर 2. ठीक है सर. फाइव पॉइंट में क्या है, चेंज इन इक्विटी वैल्यू ना सर? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? पॉइंट में क्या है सर? चेंज इन इक्विटी, पॉइंट नंबर 5, चेंज इन इक्विटी वैल्यू. हाँ जी, चेंज इन इक्विटी वैल्यू. अब 4th पॉइंट में MDGAP होगा, QDGAP. ड्यूरेशन गैप आपने एरो बना के वो लिखा है ना. सेकंड वही है सर, एक ही बात है. मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप में सर ये DA का मतलब क्या हुआ? ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स. DL ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज. और सर ये चेंज इन इक्वेशन वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा. हाँ जी, हाँ जी. अभी आप इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं. ठीक. Has everybody noted this? Don't forget this. बीट सर अभी नहीं हुआ सर. कर लो सर, आराम से करो. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா? நான் இனி எப்பவுமே அங்க வரமாட்டேன். நீங்க இங்க எத்தனை நாள் நின்னாலும் என் மனசு மாறாது. தயவு செஞ்சு போங்க இங்க இருந்து ப்ளீஸ். நான் சொல்றது கொஞ்சம் நேரம் கேளு. நாம யார் மேல அதிகமா பாசம் வச்சிருக்கோமோ அவங்க மேலதான் நமக்கு அதிகமா கோபம் வரும். அதிகமான அன்பாலதான் அவங்க பக்கம் நியாயமான பார்வை இருந்தாலும் அவங்கள நாம தப்பா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ நீ அந்த மாதிரி தான் குட்டி மேல கோவப்பட்டு இருக்க. ஏன் மேல கோவப்பட்டு இருக்க? இந்த கோபத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு பாவி. அப்போ உனக்கே எல்லாமே தெரியும். Open this case study 91 and solve question number 6 to 10. This question comes as it is. This much data is given and simply solve question number 6 to 21 or 6 to 10. You have the formulas with you now. सिंपल फॉर्मूलाज हैं यार, और कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन 10 जरा अंडरस्टैंड करो जी. क्वेश्चन नंबर 10 कुछ भी नहीं है सर, रट्टा हुआ है. सिंपल लिखा हुआ है. मार्केट फेसेस अ ड्रॉप इन एक्सचेंज इन इक्विटी वैल्यू to 250 basis point, that is 2.5%. What will be the effect on equity value? Simply put it in this formula. Change in equity value is 2.5% into modified duration of equity. That's all. सर ये क्वेश्चन ना समझ ही नहीं आता, इसको बस मेमोराइज कर लो, because this comes in almost every paper for 5 marks.
इससे पहले की स्लाइड जो थी वो दिखा देते, जरा उसको हाईलाइट कर। ये वाली नहीं सर, इससे पहले जो थी वो कैश बैलेंसेस विथ आरबीआई, वो बुक में जो दिया हुआ है सर। सर क्यों नहीं दिया हुआ बुक में से? बुक में आरबीआई गाइडलाइंस जो है सर, ये देखो सर बुक में है सारा कुछ। ये दिस इज योर पेज नंबर 78। हाँ ये सर, इसे मैं वही हाईलाइट कर दूँ। Please down sir. Okay sir. With this we finish our interest rate risk. Recording stopped. Now tomorrow कल का शेड्यूल आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा। मीन्स either I will start with treasuries or Bhala sir will start with foreign exchange, और जो भी होगा we'll inform you in the WhatsApp group. Okay? चलिए शाम को क्लास होगी ना? हाँ क्लास शाम को। हाँ जी क्लास में 7:30 बजे रहेगा। 7:30 ही होगी सर, 7:30 ही होगी। सर ट्रेजरी आप कराएंगे या बल्ला सर कराएंगे? ट्रेजरी तो मैं ही करवाऊंगा सर, फॉरेन एक्सचेंज अभी देखेंगे उन्होंने करवानी है कि मैंने करवाना है, हम अपना शेड्यूल चेक कर लेंगे। अच्छा अच्छा चलिए ओके जी, गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।